Kranti India News. Authentic, timely and reliable. रायगढ़ और कोरापुट वासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी। अब दिन में भी चलेगी भुवनेश्वर के लिए ट्रेन। रायगढ़ कोरापुट। रायगढ़ और कोरापुट जिले के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। क्षेत्र की जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही दिन के समय भुवनेश्वर के लिए ट्रेन की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। माननीय सांसद श्री सप्तगिरी उलाका के निरंतर प्रयासों और कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप रेल मंत्रालय ने इस मार्ग पर नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दे दी है। प्रमुख बिंदु। लंबे समय से थी मांग। स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से शिकायत कर रहे थे कि रात की ट्रेनों के अलावा दिन में राजधानी जाने के लिए कोई उचित रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है। सांसद का प्रयास। सांसद सप्तगिरी उलाका ने इस मुद्दे को रेल मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के समक्ष बार बार उठाया था। हालांकि इस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब जरूर हुआ, लेकिन उनके ठोस प्रयासों ने इसे वास्तविकता में बदल दिया। क्षेत्र में खुशी की लहर। इस घोषणा के बाद रायगढ़ और कोरापुट जिलों में खुशी का माहौल है। व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए ये ट्रेन किसी वरदान से कम नहीं होगी। जनता की सेवा ही मेरा प्राथमिक लक्ष्य है। रायगढ़ और कोरापुट के भाई बहनों को भुवनेश्वर जाने के लिए अब दिन में एक सुरक्षित और सुलभ साधन मिलेगा। मुझे खुशी है कि ये लंबे समय का इंतजार आज समाप्त हुआ। श्री सप्तगिरी उलाका, माननीय सांसद। स्थानीय नागरिकों ने इस उपलब्धि के लिए सांसद का आभार व्यक्त किया है। जल्द ही इस ट्रेन की समय सारणी और परिचालन की तिथि आधिकारिक रूप से साझा की जाएगी। माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी। Thank you, Chairman Madam. I'd like to raise a very important issue of my constituency, the Raigad Rail Division. It was announced way back around 8 years back, and only last year the inauguration was done by Honorable Prime Minister to set up the Raigad Rail Division. But ma'am, unfortunately, the non-notification of the railway division is causing serious problems. All decisions are taken remotely from Visakhapatnam. When the divisional review meeting, it happened in Walted Division, and there was no divisional review meeting for Raigad Rail Division. There is no divisional control office, no local operating engineering, mechanical, electrical or S&T setup. There are no coaching depot, pit line, wash shed, stabling line or wagon examination facility, because of which the new trains can't be started from this particular location. And for any new train, always they say that you need this loco pits, pit line and washing shed, etc. Madam, through you, I would like to demand the Honorable Rail Minister, the Raigad Rail Division should be notified immediately and causing serious operational problems. And we want to set up the DRM office with full departments, the operating, engineering, S&T, mechanical, electrical, etc. Establish the control unit, wash shed, stabling lines, C&W depot, S&T, electrical maintenance facilities. A new daytime train from Koraput to Bhubaneswar via Raigada. This is a demand of the people, and we want to extend the Vande Bharat train from Bhubaneswar to Visakhapatnam to Koraput, so that the people from Koraput and Raigada can avail the Vande Bharat facility. Thank you, ma'am. Make sure to hit that like button, subscribe to the channel, and share this video with all your friends. Kranti India News. Authentic, timely and reliable.